Money management is a technique where you preserve your capital, minimize your losses, maximize your profits, and also grow your capital along with it. Now, money management is quite oftenly confused along with risk management, okay? So, what exactly is risk management? Risk management is basically a technique to preserve your capital from the adverse effects of the markets, okay? So what you're doing is you're basically just preserving your capital so that you have enough capital to trade the next day as well. एक चीज़ बहुत important है कि हमें आज ही सारे ट्रेड्स कंप्लीट नहीं करने, कल भी आएगा, कल नया ट्रेड लेना है, तो उसके लिए भी कैपिटल और फंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर एक बार आपने अपना कैपिटल ख़त्म कर दिया तो वापस वो कैपिटल लेके आना मार्केट में बहुत मुश्किल हो जाता है. इसके लिए हम जो है मनी और रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज करते हैं ट्रेड करने से पहले. सो देयर आर वेरियस वेज इन विच यू कैन हैव मैनेज योर मनी. ऑलराइट, so I'm going to share a few tips with you all that how you can manage your money for basically your intraday trading or your swing trading. All right, so the first tip is that it's for an intraday trader. So when you are intraday trading, we always suggest that you should not take more than 2 trades per day. Okay, so why is that? Because if you take more than 2 trades, you are going to be risking your capital also, and also you're not going to be focused enough on one particular trade. Okay, so आपका जो ध्यान है वो बिखरा पड़ा रहेगा सारे ट्रेड्स पे. So in order to have that discipline and to have that focus, it is very important to take only 2 trades a day. Now when you're taking 2 trades, it is also important that how much capital you're going to allocate for that particular trade. So we suggest that you should not take more than 0.5% risk per trade. So that equals to 1% risk for that entire day. तो अगर आपका दोनों ट्रेड में लॉस भी हो जाता है तो आपका कितना रिस्क है? 1%. ओके, सो 1% रिस्क ऑफ योर टोटल कैपिटल. That's how much you are exposing to the markets, not more than that. The next tip is that you should always have a fixed risk to reward ratio. Okay, why you should have a fixed risk to reward ratio is so that it will help you in being a disciplined trader. Okay, so आप जब ट्रेड करते हो आपको पता है कि नहीं, मुझे आज जो है 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड मैंने रेशियो रखा है, मुझे मेरा टारगेट लेना है, इतना ही टारगेट लेना है, मुझे निकल जाना है. ओके, तो जब आप इतना डिसिप्लिन रखते हो ट्रेडिंग के समय, सो दिस इन रिटर्न हेल्प्स यू टू grow your capital and also to protect your capital, and very importantly it will also keep the 2 main emotions away, which are fear and greed. The next point is that you should always trade with a stop loss. Now आप भले जितने भी एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, आपको बहुत साल हो गया हो मार्केट में, या आपका ट्रेड बहुत छोटे अमाउंट का ही क्यों ना हो, आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि मार्केट जो है बहुत वॉलेटाइल होता है. ओके, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका ट्रेड रिवर्स हो जाएगा और आपने जितना प्रॉफिट कमाया है वो एक ही साथ लेके चला जाएगा. सो इन ऑर्डर टू be protected from such sudden events, you need to trade with a stop loss so that if anything happens or any setup goes against you, आप जितना लॉस झेल सकते हो उतना ही लॉस बुकआउट करके आप निकल जाओगे, आपका ज़्यादा लॉस नहीं होगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट टिप इज दैट पोजिशन साइजिंग. ओके, नाउ व्हाट इज पोजिशन साइजिंग? Position sizing is basically the amount of quantity that you're supposed to buy or sell for a particular trade. तो इससे क्या होता है कि you come in control of how much profit or how much loss will a particular trade make for you. The next most important tip is that we should never over trade. Okay? बहुत बार क्या होता है कि हम फॉर एग्जाम्पल आपके 2 ट्रेड्स हो गए दिन के और आपका टारगेट भी आ गया. ओके, 11 बजे तक आपका टारगेट आ चुका है. अब आप क्या करेंगे, आप जो है मार्केट्स में और स्टॉक्स ढूंढने लगते हैं. ओके, एंड आपको अगर कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप वापस वो ट्रेड में चले जाते. ओके, अब इससे क्या हो गया, अगर वो ट्रेड गलत हो गया बाय एनी चांस, तो आपने जो प्रॉफिट कमाया था सुबह में वो प्रॉफिट भी लेके जाएगा, तो आपका आज का दिन क्या हो गया, वो पूरा वेस्ट हो चुका है. ऑलराइट, सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर डे, यू शुड बी डिसिप्लिन इनफ टू जस्ट टेक 2 ट्रेड्स अ डे, take your profit or your loss and
move out of the market. Do not stay in the market the whole day and over trade. Another thing is revenge trading. बहुत लोग जो है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ईगो में आके जो है वो रिवेंज ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते, ऑलराइट. सो जो भी लॉस है वो एक्सेप्ट करो और मूव आउट ऑफ दैट ट्रेड. व्हेन यू स्टार्ट रिवेंज ट्रेडिंग, जितना लॉस होना था वो तो हो चुका है, पर उससे ज़्यादा भी लॉस होने लगता है. तो उससे क्या होता है कि आपका जो कैपिटल है वो और कम होने लगेगा. ऑलराइट. The next important thing is position sizing. Now, what is position sizing? Position sizing is basically the amount of quantity that you're supposed to buy or sell in a particular trade. तो जब आप एक फिक्स्ड क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हो तो आपका जो प्रॉफिट या लॉस होने वाला है उसके भी कंट्रोल में आप होते हो, ऑलराइट. तो जब आप ये पूरा कंट्रोल करोगे तो कभी अगर गलती से लॉस हो गया या आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो यू ऑलरेडी हैव इट इन माइंड कि मेरा इतना ही लॉस होने वाला था और इतना ही हुआ, तो आपका कैपिटल जो है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, ऑलराइट. So these techniques are very important that you need to follow when you're trading, because the most important thing in trading is that you have to preserve your capital. Capital grow तो करना है, loss भी minimize करना है, पर अगर आप capital बचाओगे ही नहीं तो आप अगले दिन use क्या करोगे trading में, alright? So trading not only helps in building your character, but it also helps in building your personality as well. But only thing is that you should have the patience to be in the game long enough. And we are going to further discuss in the next video as well that which are the different styles of trading. So stay tuned. We'll see you in the next video. Thank you.